Yes, ma'am. Yes, good morning, students. We are going to discuss today about the formal letters, in which you have already done the first part, that is complaint letters. But still, I'm going to give you reminder. Official letters, as you know, that these letters are written by an individual or on behalf of an organization. कि आप अपने लेवल पे इंडिविजुअली भी लिख सकते हो और कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी ये लेटर्स जो वो लिखी जा सकती हैं. It is addressed to the concerned official of a bank, a gas agency, telephone department, police department, municipal authority, etc., with a view to seek some information, addressing a problem or seeking relief, and to give some suggestions for the improvements. As the name itself suggests, official letters, that means we are going to write a letter to some office. So in that, different offices can be there. You can write a letter to a bank, to a gas agency, to telephone department, police department, municipal authority, for any type of complaint, the problem you are facing, to seek some information, that is inquiry letter. अगर आप complaint लिख रहे हो, कोई अपनी problem बता रहे हो, that is complaint. And if you are asking for some informations or you are seeking some relief from something, or you are making some appeal, that is your inquiry. Clear? And in the complaint letter you can give your own suggestions also. So we have two types of official letters: letters of complaint, letter of inquiry. Here, letters of complaint we have already discussed in PT1. Now letter of inquiry is the new topic for you for this PT2. So official letters of complaint, let me give you the reminder what we did in PT1. This letter is written to address any type of wrongdoing. Wrongdoing means आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में कुछ गलत हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है, मीन्स कोई चोरी डकैती या लोग जो है वो परेशान कर रहे हैं, किसी तरह से कोई इनकन्वीनियंस है आपके एरिया में, ग्रीवेंस, आपको कोई शिकायत है, एनी वाटर प्रॉब्लम, एनी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग cleanliness in your area, some problems of the street dogs, resentment arising out of services, means जितनी भी हमें services government की तरफ से या municipal corporation की तरफ से provide की जा रही हैं, if resentment means any problem regarding that, we can write a complaint letter to that particular office. Rash driving है तो आप traffic police को लिख सकते हो या police department के लिख सकते हो. Poor treatment of street dogs hai. So these type of all problems can be given in the complaint letters. Clear? Next, official letter of inquiry. This is the topic for your PT2 syllabus. Letter of inquiry asks someone for specific information. कि अगर आपको particular कोई information लेनी है, you will write to that concerned department only, to that particular department only. It could be written with respect to an item that a person is interested in, a course that a person wants to study, a vacation trip that a person wants to go on. कैसी हो सकती है हमारी इंक्वायरी लेटर्स? या आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना है, आपने कहीं एडमिशन लेनी है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो किसी स्कूल से, किसी इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, किसी तरह का भी कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, you can ask the information from that by writing this letter. Or you want to arrange some trip for your vacation, आप छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहते हो, स्कूल की तरफ से कोई ट्रिप जा रहा है, तो आप उस ट्रैवल एजेंसी, किसी भी ट्रैवल एजेंसी से जिसके भी एडवर्टीजमेंट आपने देखी है या जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन है, यू कैन राइट दैट इंक्वायरी. वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू आस्क फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, you can write in that letter. Now, what is the marking scheme of your letter now? It is of 5 marks only. Clear? Earlier it was of 8 marks, but now in your syllabus it is only of 5 marks, in which 1 mark is given for the proper format, that is sender's address, date, receiver's address, subject, salutation, complimentary close. Clear?
and 2 marks are there. Relevant ideas to be presented in a coherent way. Use connectors appropriately, divide into paragraphs, and there should be minimum 3 paragraphs in your letter. First you will explain, we'll discuss it in the next part. 3 paragraphs में कैसे कैसे आपको देना है. It is only for the marking scheme that you are getting 2 marks for the content part what you are writing. Then 2 marks are there for the expression. What is taken in the expression? Your grammatical accuracy, spellings and coherence, relevance of the ideas, कि कितना आपका आइडिया जो है वो आपकी प्रॉब्लम के साथ या आपकी टॉपिक ऑफ इंक्वायरी के साथ लिंक कर रहा है और उसको आप कैसे कोहेयर कर रहे हो, कैसे उसको लिंक कर रहे हो आपस में. 1 mark for that and 1 mark for the grammar and spellings. Clear? Now please note down the word limit. It is 120 to 150. मीन्स लिमिटेड वर्ड्स में आपके लिखना है. आप इसकी वर्ड लिमिट भी कम कर दी गई है. और स्पेशल नोट इज गिवन टू यू दैट नो मार्क इज अवॉर्डेड इफ ओनली द फॉर्मेट इज गिवन. कई बार आप क्या करते हो, अंदर कंटेंट पार्ट कुछ नहीं लिखते हो, बॉडी में कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन सिर्फ आप फॉर्मेट ऊपर का एड्रेस नीचे योर्स फेथफुली लिख के खत्म कर देते हो. नो मार्क्स विल बी गिवन दैट फॉर्मेट. कि 1 नंबर जो इसका फॉर्मेट क्या है वो तब मिलेगा अगर आप बॉडी लिखते हो. दैट मीन्स कंटेंट पार्ट आप लिखते हो, चाहे वो गलत हो, कुछ भी जितनी मर्जी मिस्टेक हो उसमें, फिर भी आपको फॉर्मेट का 1 नंबर मिल जाएगा. लेकिन अगर आप बॉडी पार्ट नहीं लिखते हो तो नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द फॉर्मेट. So credit is given for the candidate's originality and creativity in presenting his or her ideas. कि अगर आप अपने original ideas, original language में अपनी creativity के साथ लिखते हो, you will get more marks. So mixing up of the traditional and modern layout is not acceptable. Modern and traditional layout means हम जैसे letters पुराने time में जब लिखते थे तो we write on the right side. Format में ऊपर address right side पे लिखते थे. Traditional method. Now the modern method is there, so don't mix up both the methods. Nowadays, since the computers has started, the modern method is adopted, so you must go for the modern method only. Clear? Don't go for the traditional method. Next, see the format. How you are to frame your letter. This is the proper layout or the format already discussed with you when we did the editorial letters or the letters of complaint official. But still I'm giving you the reminder. First you have to write the sender's address, means your own address. Then date should be written in proper format in expanded form. Then receiver's address should be written. Salutation, then subject. Please note salutation can go after the subject also. दोनों तरह से हो सकता है कि आप salutation पहले भी लिख सकते हो और subject के बाद भी लिख सकते हो. दोनों तरह से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. there is no hard and fast rule for this, but it must be written. Salutation जरूर लिखनी है, subject जरूर लिखना है. Then next body, beginning, content, end. Clear? Then the last point is subscription, that is complimentary ending. What you have to write, yours sincerely, yours truly, or yours faithfully, which is not mentioned here. You can write any out of these 3. Clear? Next, there are some important lines or the useful lines given to you which you should note down with yourself. Otherwise I'll send you this PPT and then you can note down in your notebook, which you can use in these type of letters. Official letter कोई भी लिखनी है, आपने complaint लिखनी है या inquiry लिखनी है, तो दोनों के लिए अलग-अलग इसमें lines जो हैं वो mention करी हुई हैं, which you can start and end your letter with. I wish to bring it to your notice. आप कोई complaint करना चाह रहे हो, तो you can start with this. I would like to draw the immediate attention of the concerned authority again for complaint. May I draw dash attention means आप यहाँ authority का नाम लिखते हो कि किस authority का आप ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते हो to a matter of utmost concern that deserves immediate redress. That means again for the complaint letter. With reference to the above mentioned subject means जो आपने subject ऊपर लिखा है उसके reference में आप बात करने जा रहे हो. You can start this also. Then next 3 points are referred to the inquiry letter. Or you are to start if you are giving some inquiry, you have seen some advertisement in the newspaper or in some magazine or on TV or somewhere, and you want to refer that new advertisement, and accordingly you will make the inquiry. What you can write here,
I saw your advertisement in the newspaper. You can start with this line. Clear? Then this letter is in reference to the advertisement published in, that means you have to write the name of the newspaper here, dated किस date को publish हुई थी. I means you have to give your introduction after this. ठीक है, कहाँ आपने advertisement देखी, उसका newspaper का name, उसकी date, किस दिन की advertisement थी वो, और आप कौन हो अपने बारे में introduction देते हुए. You can start your letter for the inquiry. Then next, after reading your advertisement about dash, किसके बारे में आपने advertisement पढ़ी, you can mention the topic. I wish to make certain inquiries, again for the inquiry letters. Clear? So in this way you can ask. Next, again some useful lines are there. I am writing in response. आप again with the advertisement response आप लिख रहे हो I am writing to complain about, complaint letter के लिए है. I read your advertisement for, again for the newspaper reference. I would be, now see the ending lines, how you can end the letter with, I would be grateful for information about, when you are getting some inquiry, and you can write at the end that I would be grateful. Note down the spellings of grateful, Grate, that means thankful for the information if you provide me. Could you tell me if, means for the inquiry. I wish to find out more about, कुछ और आप extra information, कोई additional information लेना चाहते हो, again you can add this line. I look forward to receive a reply. At the end you can say that you are looking forward for their reply. Now note down some tips and understand very clearly particular tips which you have to keep it in mind while writing your official inquiry or complaint letters. You should be very brief, clear, concise and to the point. Don't give so much details. बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनानी है, ठीक है, ब्रीफ में देनी है, क्योंकि अब वैसे ही आपके मार्क्स भी 5 हैं, वर्ड लिमिट भी कम है. आपने टू द पॉइंट जो आपकी प्रॉब्लम है उसको कंप्लेंट में लिखना है, या आप जो इंक्वायरी करना चाहते हो गिव इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. Then use a proper layout, that means proper format for these formal letters. Use block format which is already discussed above. Block format means left hand side पे आपने proper format में उसको देना है. Then use of punctuation mark is adopted in the indented form. It is dispensed within the block format. So indented form क्या होती है, जब हम पूरा एक ही लाइन में लेफ्ट साइड राइट साइड पे एड्रेस लिख के पूरा एक लाइन से स्टार्ट करते थे, एक ही पैराग्राफ में लेटर लिखते थे. You are not using that format, so it is mentioned, it is dispensed within the block format. आप block format लोगे, लेफ्ट साइड पे अपना एड्रेस लिखोगे, और आप कहीं से भी पैराग्राफ छोड़ के नया पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो. तो you are to not to use any punctuation mark. कोई कॉमा वगैरह नहीं डालना आपको एड्रेस वगैरह में. Don't mix the two formats. दोनों formats को mix नहीं करना है, एक ही format follow करना है, that is writing everything on the left hand side, not on the right side. It would be better for you to practice and follow the block format which is in vogue, means in fashion. आजकल fashion में यही है. And after introduction of the computers, जब से introduction हुई है, computers introduce हुए हैं, the letters are being written in this modern format only. That means writing sender's address, date, then receiver's address on the left hand side, and ending complimentary end also on the left hand side. Then convey facts briefly but impressively. Indicate the theme in the initial para of the body of the letter. जो आप first paragraph लिख रहे हो, initial para means first paragraph लिख रहे हो, उसमें अपना लेटर का जो आपका थीम है, जो टॉपिक है, उसके बारे में मेंशन करना है कि अगर कंप्लेंट है तो क्या प्रॉब्लम है आपको, उसको फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करना है. अगर इंक्वायरी है तो आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देकर आप किस चीज की इंक्वायरी लेना चाहते हो, दैट यू मस्ट mention in the first paragraph. Then develop your points in the middle paragraph, and then give the detail in the second paragraph, middle paragraph, and conclude, give suggestions in the final part of the body of the letter. और जो final means third paragraph आपका, उसमें आप अपनी लेटर को conclude करो. अगर complaint है then give some suggestions from your side कि जो आप complaint लिख रहे हो उसको solve करने के लिए क्या solutions हो सकते हैं. Give your suggestions, that has separate marks in the body. And if you are writing some inquiry letter, then conclude your letter by expecting and giving hope that you will get the response soon, and you can mention your email ID if you want to
mentioned there, so that the response can be received. Then again, some tips are continued on the next slide. Use simple and direct language. Avoid the use of long and high sounding words and ambiguous construction. Ambiguous means which is not clear. आपने ऐसी लैंग्वेज या ऐसी कंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस की नहीं देनी जो कि कंफ्यूजिंग हो. डायरेक्ट लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, शॉर्ट सेंटेंस में अपना पॉइंट जो है पुट अप करना है. नेक्स्ट, बी कॉर्टियस. इवन वाइल लॉजिंग अ कंप्लेंट और क्रिटिसाइजिंग यू शुड बी पोलाइट एंड चार्मिंग. कि अगर आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो, चाहे आप उसमें कंप्लेंट दे रहे हो, कोई शिकायत कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट के वर्कर्स को, even then you should be very polite and courteous to them, not harsh. Don't use any harsh words. Then remember the following points about the block format. क्या ध्यान रखना है आपने जब फॉर्मेट का ध्यान देना है. There is no indentation. Indentation means जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में आपको सीधा स्ट्रेट लाइंस में लिखना है. आप एक पैराग्राफ खत्म कर रहे हो, अगला पैराग्राफ आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर स्टार्ट कर सकते हो. जरूरी नहीं कि उसी की स्ट्रेट में स्ट्रेट लाइन के वे में आपने दूसरा पैराग्राफ कहीं से शुरू करना है, ऐसा नहीं है. ईच ब्लॉक बिगिंस विद द मार्जिन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर फिर आपने अपना पॉइंट जो है, जो भी लिखना है, वो स्टार्ट करना है. एक्स्ट्रा स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस एंड पैराग्राफ्स. अगर आप उसके अलग अलग पैराग्राफ बना रहे हो तो उन पैराग्राफ के बीच में स्लाइट मार्जिन देना है. दैट मीन्स अगर आपकी लाइन मिड में एंड हो रही है तो उसको छोड़कर अगले पैराग्राफ को स्लाइट मार्जिन छोड़कर फिर स्टार्ट करना है. ठीक है. देन omit punctuation marks in address, date and salutation. In case you put a comma in the address, use it throughout. Don't mix the two systems. It is better not to use the punctuation mark. ठीक है. पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं आजकल डिलीट हो चुके हैं मॉडर्न स्टाइल में, तो डोंट यूज एनी पंक्चुएशन मार्क anywhere in the format. Now see the example given to you. I'm going to have a reading for this one sample which we have already covered, complaint letters. The topic given to you is, you are Sanjeet of 122 Arjun Nagar, New Delhi. A number of scooters and cars are parked in your locality without any order, causing blockage of the streets. Write a letter to the local secretary of the residents association complaining against this problem. Means आपको पार्किंग की प्रॉब्लम जो आ रही है, accordingly you are to write a complaint letter to the resident association. See your address mentioned first, the sender's address 122 Arjun Nagar, New Delhi, February 20th 2019. You can write date accordingly. See the format of the date, first name of the month, then date, then comma, then year. ठीक है. You can mention 20th February comma 2020 or 2021, whatever the year is there. ठीक है. क्लियर. दोनों तरह से लिख सकते हो आप. मंथ का नाम पहले भी लिख सकते हो, डेट पहले लिख के मंथ का नाम पीछे ले सकते हो, लेकिन मंथ का नाम फुल लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी. और ना ही बीच में आपने ऑब्लिक्स डाल के या हाइफन डाल के डेट लिखनी है, कि जैसे आप लिख देते हो 20-2-19, ऐसा नहीं लिखना. 20/2-19 ऐसे नहीं लिखना. फुल फॉर्म में लिखना है. मंथ का नेम आइदर इन द बिगिनिंग और डेट इन द बिगिनिंग, देन मंथ नेम, देन ईयर. ठीक है. देन रिसीवर्स एड्रेस, द सेक्रेटरी जो भी उस ऑफिस में हेड होता है, मैनेजर या सेक्रेटरी कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग टू द टॉपिक यू हैव टू टेक. सो दिस इज रेजिडेंट्स एसोसिएशन, सो इट विल हैव सेक्रेटरी. कोई ऑफिस होगा तो उसमें मैनेजर हो सकता है. रेजिडेंट्स एसोसिएशन, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल डालना है हर एक का, ये ध्यान रखना है. जो भी आप रिसीवर्स एड्रेस या सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हो, फर्स्ट लेटर of each word should be capital. The secretary, the T capital, S capital. secretary, the जरूर लगाना है इसके आगे, मैनेजर या सेक्रेटरी जो भी है. Then resident, R capital, association, A capital, New Delhi, N capital, D capital. Then salutation, sir. Subject is mentioned, complaint regarding the issue of bad parking habits in the locality. Clear? So in this way you will be writing first, in first paragraph your problem, in second paragraph detail of that problem, what you are facing, then in the third paragraph some suggestions, and ending with yours sincerely and the name, or if any designation is there of some person, that should also be mentioned. Clear?
coming to the next. See on the slide, which is the topic for you today. Inquiry. You are Jolly of class 12th. You are interested in pursuing a course in visual communication. आप visual communication में कोई course join करना चाहते हो. You have seen an advertisement issued by the National Institute of Communication पुणे. आपने advertisement पढ़ी है जो कि National Institute of Communication पुणे के द्वारा दी गई. Offering courses in media and communication. कौन सा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो? In media and communication. You have to write a letter to the director seeking information about their courses, fee structure, placement opportunities, etc. Means आप क्या पूछना चाहते हो उनसे? Seeking information means आप इंक्वायर करना चाहते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन उनसे मांग रहे हो कि आपको उस कोर्स के बारे में डिटेल में बताया जाए, उसका फी स्ट्रक्चर बताया जाए और उसकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बताई जाएं. ठीक है, किसके कोर्स करने के बाद क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी. सी द सैंपल नाउ. Address is given to you. D4020 ABC Lane, capital first letter for each word. Then name of the city. If it's not given, mention XYZ or ABC. Then date 14th April, comma. यहाँ डेट के बाद और मंथ के बाद कॉमा डालना जरूरी है. देन 2000. अगर आप कुछ भी नहीं मेंशन करना चाहते, 20 के बाद आप क्रॉस डाल सकते हो. ठीक है. Then receiver's address, the director, the T capital, director D capital, and the name of the institution, National Institute of Communication, N capital, I capital, communication, C capital. Name of the place, Pune, P capital. Then subject, seeking information about the course in visual communication. This topic is given in the topic itself. जो आपको टॉपिक मिलता है उसमें ऑलरेडी ये सब्जेक्ट आपको दिया होता है, आपने वहीं से सब्जेक्ट उठाना होता है. Then salutations, sir. This is in response to your advertisement in the daily. This is the name of the newspaper given, the daily within inverted commas, dated 12th April 2021 or 20, whatever you want to write, regarding courses offered by your institute in media and communication. I have just appeared for my class 12th examination. आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देनी है कि आप कौन हो, आपने कितनी एजुकेशन ली, क्या कर रहे हो आप इस टाइम पे. And am interested in pursuing a course in visual communication. Pursuing means follow करना चाहता हूँ कि मैं अब after +2 ये कोर्स जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसमें इंटरेस्टेड हूँ. As very little information means almost no information is available about this course. I would be extremely grateful. Note down the spellings means thankful. You can write thankful अगर आपको spellings में problem आ रही है. If you could send me detailed information about it so as to enable me to move on to the next step and try to see admission in your reputed institute. Please forward the following details at the earliest. Please write these type of informations in the points, it will be better. जैसे इस लेटर में सैंपल दिया गया, पॉइंट्स में जो भी पूछना चाहते हो अपनी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो. फर्स्ट, प्रोसीजर फॉर एडमिशन कि कैसे एडमिशन लेनी है, क्या प्रोसेस है उसका. सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कितना ड्यूरेशन होगा, 6 months होगा, 1 year होगा, 2 years होगा. Then eligibility criteria, क्या eligibility है, that means whether after +2 I can join it or some other eligibility is required. Then fourth point is course fee, मतलब इस कोर्स की कितनी फीस होगी. इंस्टॉलमेंट फॉर ईच टर्म, कि अगर उसको इंस्टॉलमेंट्स में देना हो तो टर्म वाइज कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी. प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन, कि आफ्टर कोर्स कंप्लीटिंग व्हाट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आर, मींस जॉब कि क्या अपॉर्चुनिटीज आगे हैं इसको करने के बाद. Any other relevant information related to this course, any other information which is important and they want to send to the customer or to the students, they can also mention. ठीक है, इसके अलावा आपके माइंड में कोई और प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वो भी पूछ सकते हो. Then ending, देखिए third paragraph. I'm extremely keen to join the above mentioned course and would be obliged if you mail me a prospectus for the same in the self-addressed stamped envelope enclosed herewith. मीन्स मैं अपना सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ आपको एक एनवेल्प भेज रहा हूँ जिसके ऊपर स्टैम्प भी लगी हुई है. आप उसमें मुझे प्रोस्पेक्टस जो है वो प्लीज भेज दीजिए और ये डिटेल जो है मुझे आप ईमेल कर सकते हो. अवेटिंग योर अर्ली रिस्पॉन्स. Yours sincerely, name is mentioned,
and you can add your contact number also at the end. No problem is there. Clear?